Namaskar, Sasyakal, Adab, good evening, and a warm welcome to everyone at Motherhood Club on Facebook and YouTube. Yet again, Motherhood Club is making a new beginning. 10 सितंबर 2021 को हम सब आपसे आके मिले थे, जहां हमने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की थी कि हम सैनिटरी नैपकिन उन महिलाओं को, उन बच्चियों को प्रोवाइड करेंगे जो शायद इसके आदी नहीं है या जानते हैं इसके बारे में लेकिन किसी कारणवश खरीद नहीं पाते हैं। तो एक सिटी से शुरुआत करते-करते धीरे-धीरे हम करीबन 7 से 8 सिटीज़ तक पहुँचे, जहाँ हमारे सोशल क्रूसेडर्स ने सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया, बच्चियों को, बड़ी औरतों को और बहुत सारी दुआएँ, ब्लेसिंग्स हमारे सारे कंट्रीब्यूटर्स को भी मिली। फिर हमने मेंस्ट्रुअल पैड्स जो हैं उसको रखने के लिए उसकी जो वेंडिंग मशीन आती है, उसकी इंस्टॉलमेंट 3 जगह पे की। तो बहुत समय से एक ऐसी चीज़ के बारे में हम सब सोच रहे थे कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसको डिस्पोज़ करने का भी एक तरीका होता है और जब हम उसको डिस्पोज़ करते हैं, वो बहुत जल्दी धरती से जाके मिलता नहीं है, अर्थात पॉल्यूशन। It takes a long time for it to get blended with Mother Earth, and hence a need for a more sustainable product was needed. There is a sustainable product which is available in the market, and I'm sure many of you would be aware of it, but we still don't use it. Why? There are many reasons. Reasons like something which is more invasive, lack of awareness, lack of knowledge, or here when you buy a sanitary napkin, you buy a packet of maybe 25, 30 rupees. Use two packets or three, 70, 100 rupees. Month on month, you spend this money and you feel that's all. But a menstrual cup, to begin with, is priced anything between 250 to 300 rupees, which may look like a big amount in one go for a lot of people, but without realizing that it is not a recurring expense. So, as a first, we are delighted to announce our collaboration with Sirona Hygiene Foundation. Sirona Hygiene Foundation has been working extensively towards female health, providing products which are beneficial for a lady's health. And menstrual cup is one such product which is not only being offered by Sirona Hygiene Foundation, but they also train you, they also guide you as to how the product has to be used. But before that, they help you break many myths. So, with us today, in addition to our co founder Ila Pachari, is Dr. Arushi Malhotra, who by qualification is a dentist, continued to do her post graduation in hospital management, and for the last 7 years has been extensively working to create awareness about feminine health. So, very warm welcome, Dr. Arushi, at Motherhood Club. And after a long months and weeks conversation, we are finally here, giving it that shape that we have wanted to. So, welcome to Motherhood Club. Thank you. So, Thank you so much. yeah, so before we proceed any further, I'd like Ila to add a few words of how our journey has been from 10 September 2021 till now about offering sanitary napkins to the young girls at different places, be it a school, be it in a slum area, be it to women who are aware about it but yet are not buying it for obvious reasons. So, Ila, some thoughts before we move on to have a more meaningful conversation with Dr. Arushi. Thank you so much, Ekta, and welcome, Dr. Arushi, and welcome our beautiful guests who are watching us from the outside. जब जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 सितंबर में, that we are slowly inching towards a sort of a revolution. Many organizations, NGOs, and groups, they do
distribution of sanitary napkins. What made it different when we went out distributing sanitary napkins? हमारे जो क्रूसेडर्स थे, सोशल क्रूसेडर्स, वो खुद जाकर उन बस्तियों में उन लेडीज से बात करते थे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एकता और मैंने भी कोशिश की कितनी ही बार, समय समय पर एनजीओ रन ग्रुप्स को जाके मिलना, उन लेडीज से बातचीत करना, उनके इश्यूज समझना, just by the way of this exercise of going, meeting these women and distributing sanitary napkins. This sort of opened a conversation or a communication with them. A sanitary pad became the means of communication or a easy conversation. आइस ब्रेक हुई, बातें चालू हुई, प्रॉब्लम्स पूछे गए, बताया गया क्यों यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत अमेजिंग बात ये थी कि बहुत पिछड़े तबकों की लड़कियों को भी ये बात पता थी कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है। हाँ, खरीद नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं होते। वहाँ पर भी एकता विद हर, because she's been a fin mentor and I have had an experience of interacting with many women from all age groups, across all age groups. We tried putting sense into these women that it's not about money, it's about your intent. 28-30 रुपए का जो पैकेट है, वो आप 2 प्लेट चाउमीन खरीदते हो तो उतने में आ सकता है, या अगर आप गुटखा बीड़ी लेते हो तो उतने पैसों में आ सकता है, या फिर आप इसके लिए अर्न करना शुरू करो। दूसरी चीज़, जो लड़कियां छुपा कर लेके जाती थी शुरू शुरू में, उसको एक ब्लैक पैकेट में रख के फिर वो ओपनली लेके जाने लगी पैकेट को, कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। इफ़ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, अगर पीरियड्स हैं तो इसमें शर्माने घबराने की कोई बात नहीं है। और हमारी जर्नी इस तरह से आगे बढ़ी। एंड देन वी मेट डॉक्टर आरुषि फ्रॉम सिरोना एंड वी वर एक्चुअली, आई मैं क्योंकि सोशल, मैं ग्रीन क्रूसेडर हूँ, मैं हमेशा एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के बारे में सोचती हूँ, बात करती हूँ कि किस तरह से हम अपनी धरती पर कम से कम बोझा डालें गंदगी का। वहाँ पर डॉक्टर आरुषि ने आगे बढ़कर हमारे साथ में बात की और आज हम आप सबके सामने हैं और आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में। वो क्या है, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर आरुषि इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। सो डॉक्टर आरुषि, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हम पार्टनर कर पा रहे हैं और आगे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। और सबको ही बहुत बड़ा थैंक यू और हेलो कि आप सब हमारे सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं सिरोना हाइजीन फाउंडेशन से हूँ और सिरोना हाइजीन फाउंडेशन में हम जो काम कर रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पर कि कैसे हम पीरियड पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं और जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल ऑप्शंस उन औरतों के लिए जहाँ पर या तो उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए या उनको हर महीने किसी का इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई आए और उनको सैनिटरी पैड्स दे। और अभी तक पिछले 2 साल में हम कुछ 10,000 औरतों को मेंस्ट्रुअल कप दे चुके हैं, उनको ट्रेन कर चुके हैं। कुछ 70,000 लड़कियों और औरतों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि कैसे वो अ, एक पहल कर सकती हैं या एक स्टेप ले सकती हैं टुवर्ड्स मेकिंग अ स्विच टू अ मोर सस्टेनेबल ऑप्शन। जहाँ तक बात है मेंस्ट्रुअल कप की, तो मेंस्ट्रुअल कप कुछ ऐसा दिखता है और ये सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप है। अभी तक सिरोना कुछ 10 लाख मेंस्ट्रुअल कप्स बेच चुका है। मतलब सिरोना मेंस्ट्रुअल कप के कुछ 10 लाख यूजर्स हैं, प्लस 10,000 वो औरतें जो इसे खरीद नहीं सकती हैं। मगर इंडिया में हर औरत डिजर्व करती है कि वो एक साफ और स्वच्छ पीरियड एक्सपीरियंस करे। तो इस वजह से हमने ये फाउंडेशन बनाया और इसमें हम काम करते हैं। सो ये है एक मेंस्ट्रुअल कप। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये पैड जैसा नहीं है, अंदर से हॉलो होता है क्योंकि ये एक कलेक्टिंग प्रोडक्ट है। पैड की तरह ये एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट नहीं है।
व्हेन आई से कलेक्टिंग मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, बहुत जाता है। पैड जैसे उसको सोख लेता है वैसा प्रोडक्ट नहीं है ये। थोड़ा सा अगर मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताऊं तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये प्लास्टिक या रबर का नहीं बना है। This is made of medical grade silicone. When I say medical grade silicone, it is the same material that is used in hospital equipment. आप सबने कभी नोटिस किया होगा जो लोग बेड पर होते हैं या जिनकी अभी सर्जरी हुई होती है, जो मूव नहीं कर सकते, they get a urine bag attached to them. There are some tubes and pipes that go inside the body. Those tubes and pipes are made of a similar material. Again, someone has a ventilator. There are some tubes and pipes that go down the lungs. That is made of the same material. So, which means this material is not plastic, neither is this rubber. This is medical grade silicone, extremely safe to use. बिकॉज अनलाइक पैड्स जो बाहर यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं, हम अंडरवेयर पहनते हैं, वजाइनल कैनाल की ओपनिंग पर एक पैड चिपकाते हैं, वो पैड हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड सोख लेता है। इस कप को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने वजाइनल कैनाल में और इसको कहीं यहाँ सर्विक्स के नीचे रहना पड़ता है टू बी एबल टू फंक्शन. So this has to go inside the body, so it has to be extremely safe. The second thing about the material with which the menstrual cup is made, this material is inert in nature. When I say inert, it means this material does not react with my body. हम सब औरतें या जो भी लोग कानों में या हाथों में कुछ पहनते हैं, अगर हम वो फैशन ज्वेलरी पहनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसको। कभी कान पक जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, कभी किसी को डस्ट से छींकें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस चीज़ को। हमारी बॉडी हमें एक संकेत देती है कि इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, राइट? With the cup, the body doesn't react. Why? Because the body accepts the cup as its own part. Okay. So these are two things about the material with which the menstrual cup is made. One, this is medical grade FDA approved silicone. Second, this is inert in nature. ठीक है। अभी आप लोगों की कोई सवाल है या जी। मैं और आगे बताती तो आपने जैसे बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये बॉडी के अंदर जाता है, तो हाउ कन्वीनियंट और डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एनीवन टू यूज़ इट, और इसके लिए कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि एक बहुत क्योंकि कोई चीज़ है जिसमें कुछ इकट्ठा हो रहा है, स्पिलेज हो सकती है, क्योंकि अगर स्पिलेज होगी तो कपड़े सॉइल होंगे, सॉइल होगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो ज़्यादातर लोग शक्लें बनाएंगे, कि भाई योर क्लोथ्स आर स्टेन्ड। तो वो इशू को कैसे हम इसमें रिजॉल्व कर पाते हैं? So basically, जो menstrual cup है ना, of course it has to be introduced and inserted inside the vaginal canal, right? Some things that you need to keep in mind before using the menstrual cup. One is hand hygiene. Hands have to be very clean. Nails have to be cut, right? Especially of the hand with which you will introduce the cup inside the body. ठीक है? ये कप को यूज करना बहुत कन्वीनियंट है। इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज वर्किंग, समवन who has a standing job or a sitting job, or you go to office, or you are a homemaker, full time mom, you have a lot of things at the back of your hand, बहुत ही convenient. And when you have inserted the cup properly, you will not even feel it, unlike pads, जो pads को लगा के हमें एक heavy feeling आती है, गत्ते जैसा फील होता है, गीला गीला लगता रहता है, स्पेशली इन समर व्हेन देयर इज शेफिंग, व्हेन द थाइज रब विद ईच अदर, हमें इचिंग होती है, रैशेस होते हैं। जस्ट अ फन फैक्ट, इफ आई विल एवरीवन हु इज ऑन दिस कॉल, इफ आई विल आस्क यू गाइस कि क्या आपको कभी अपने पैड से एक फाउल स्मेल आती है? एंड एवरीवन विल से हाँ आती है, राइट? Our menstrual fluid has no smell. It's like clean water. If the water is clean, it will not have any foul smell or good smell. There's no smell, there's no fragrance, there's no badbu, nothing. Just like that, menstrual fluid has no smell of its own, right? And that you will discover when you will start using the cup, right?
When the menstrual fluid accumulates on a pad, it starts oxidizing when it comes in contact with the air. With the cup, then no such problem happens. Why? Because it is inserted inside. You are completely not using a product which is absorbing menstrual fluid. इसको तो बस से भरेगा. Every 8 to 10 hours, you will remove it and dump the menstrual fluid in the pot. It is super advisable for women who work out, who swim, who jog, who go to treks, who are travelers, or who have a traveling job. Every one of them, right? You said spillage, and you know how much time or how much training is required. कि हमें कितनी ट्रेनिंग या कितनी आदत की ज़रूरत है. तो देखिए, हर चीज़ जो हम नई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हमें एक जर्नी अंडरटेक करनी होती है. जब हम सब औरतों को जिसको पीरियड्स आते हैं, हम सबको जब पीरियड्स आए हमें कहा यही पैड, ये लो पैड, यही अब तुम्हारी ज़िंदगी, महीने के 5 दिन अब तुम्हें यही इस्तेमाल करना है ना? हमने क्या किया, हमने धीरे-धीरे पहले हमने बहुत क्वेश्चन किया, हमें लगा हमें पीरियड्स क्यों आते हैं, मेरे पापा को क्यों नहीं आते, मेरे भाई को क्यों नहीं आते, इसको क्यों नहीं आते, इसको क्यों नहीं आते, बट हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यही अब हमारी लाइफ है. फिर हमने पैड को धीरे-धीरे एक्सेप्ट किया, हमने एक जर्नी अंडरटेक करी उसको यूज़ करने के लिए. हमने धीरे-धीरे सीखा उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पैड को इतना % आगे, उतना % पीछे, अगर अंडरवियर के पूरा ऐसे चिपकाओगे तो पैड हिलेगा नहीं, ये सब चीज़ें हमने सीखी. ठीक है. फिर हमारे को थोड़ी थोड़ी स्टेनिंग होती थी. फिर जब हम रात को सोते थे अलग अलग पोजिशन में तब स्टेनिंग होती थी. तो हमने डिस्कवर किया मैं एक नहीं मैं 2 पैड्स लगा के सोऊंगी. उसमें स्टेनिंग खत्म हो गई. फिर हमने ऐसे धीरे 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 करके हमने अपनी जर्नी अंडरटेक करी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हम नया इस्तेमाल करेंगे तो एक जर्नी अंडरटेक करनी पड़ती है, राइट? कप के True. साथ भी ऐसा ही है. आप 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक अगर कप यूज करोगे, आप बिल्कुल उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे. जब तक आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप कप के साथ एक पैंटी लाइनर या पैड इस्तेमाल करो. ठीक है. बिकॉज कप को आप इंसर्ट कर देते हो, पैड को आप बाहर लगाते हो. तो आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लगता है कि अरे कहीं लीकेज ना हो जाए, कहीं मैंने कप अच्छे से इंसर्ट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक आप एक पैड या पैंटी लाइनर यूज करो उसके साथ फॉर अ कपल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ. जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, पैड पे आपको कोई स्टेन्स नहीं दिखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि अरे मैं क्यों ही लगाऊं पैड अब. तो आप खुद ही पैड खरीदना और यूज करना बंद कर दोगे. ठीक है. तो कुछ जर्नी, कुछ महीने, कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लगेंगे आपको उसको यूज टू होने के लिए. जब आप यूज टू हो जाओगे तो ये सारे इश्यूज और जो माइंड ब्लॉक्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. जहाँ तक स्पिलेज की बात है, उसमें भी यही चीज़ है कि धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि मैं कैसे रिमूव करूँ कि स्पिलेज ना हो. ठीक है. एनीवे, जब अगर हम मेंस्ट्रुअल कप को 8 से 10 घंटे यूज़ करते हैं और हम ऑफिस में या कहीं पर भी जाते हैं, तो हम वहाँ से वापस जब घर आ जाएं तब हम मेंस्ट्रुअल कप को एम्प्टी करें, ताकि हम अगर स्पिलेज भी हो रही है तो अपने बाथरूम में हो रही है, हम अपने पूरे कपड़े चेंज करके या उतार कर हम मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव कर सकते हैं. जब शावर ले रहे हैं तब रिमूव कर सकते हैं, सो दैट इन केस थोड़ी बहुत स्पिलेज होए भी तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं. बट वो भी तब तक होगी जब तक आप प्रॉपरली सीख नहीं जाते. द मोमेंट आप वो सीख जाते हो, द मोमेंट आप वो जर्नी अंडरटेक कर लेते हो और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो वो स्पिलेज भी खत्म हो जाता है. वैसे मेंस्ट्रुअल कप से लीकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक एब्जॉर्बिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर नहीं होता है. अगर आपने अच्छे से इसे इंसर्ट किया है तो इसमें कोई जगह ही नहीं है स्पिलेज. Right. Okay. So, I have a Doctor, question. Can I ask a question? yes, Yeah. yes. ये था, सपोजिंग 8 आवर्स में नहीं चेंज कर पाए, ठीक है, या किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उनका कप जल्दी भर गया, ये सिग्नल कैसे आएगा कि कप अब ब्रिम तक आ गया है एंड इट नीड्स टू बी एम्प्टीड? ठीक है. सो एक जो एवरेज मेंस्ट्रुअल कप का साइज है, जो मीडियम कप है, जो हर औरत जो या तो 24 साल से ऊपर की है या शादीशुदा है और बच्चा है, वो यूज कर सकती है एक मीडियम कप. एक मीडियम कप कुछ 22 ml का होता है. ठीक है.
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें कुछ 30 से 70 से 80 ml ही खून आता है। अच्छा। ओके, तो एक तो बहुत कम चांस होता है कि 6 या 8 घंटे में आपका पूरा कप ऊपर तक भर जाए। ठीक है, अभी अगर मैं आप सबसे पूछूंगी क्या आपको लगता है आपको बहुत हैवी फ्लो होता है, सब कहेंगे हाँ हमें बहुत हैवी फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि पैड पर आता है, वो पैड पर वो फैल जाता है। जब वो पैड पर फैल जाता है तो हम सबको लगता है हमें बहुत फ्लो आता है। जब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वापस आकर मुझे कहा जब से मैंने कप यूज करना शुरू किया मेरा तो फ्लो कम हो गया, बट वो फ्लो असल में था ही उतना। कप के इस्तेमाल करने से कुछ कम या ज्यादा नहीं होता है, बट वो फ्लो असल में था उतना। तो आपको अगर शुरू में श्योर होना है कि आपका फ्लो कितना है तो एवरी 6 आवर्स आप अपने कप को एम्प्टी करो, ताकि 1 या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता चल जाए कि मेरे को कितना फ्लो आता है। हो सकता है फर्स्ट डे को ज्यादा आता हो सकता है फर्स्ट सेकेंड डे को ज्यादा आता हो। तो वो श्योरिटी होने के लिए आप कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक 1 या 2 आप 6 घंटे में कप को खाली करो, सो दैट आपको पता हो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कितना आता है। ठीक है, और वैसे ऐसा 8 घंटे में भी नहीं होगा कि पूरा कप मीडियम कप भर जाए। ठीक है, इन केस आपको इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। वो चीजें भी आपको इससे पता चल सकती हैं कि आपको असल में बहुत हैवी फ्लो आता है, तो वो भी आपको एक कप इस्तेमाल करके अगर आप 6 घंटे में खाली कर रहे हो तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू। तो डॉक्टर आरुषि, क्योंकि आपने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये इन्वेसिव प्रोडक्ट है, तो is there a right age when menstrual cup needs to be used? The starting age? एक बार please menstrual cup दिखा दीजिए. Somebody is asking if you can show it on screen again. तो मैं आपको 3 साइजेस कैन यू के पुट मेंस्ट्रुअल ऑन कप्स दिखा स्पॉटलाइट देती हूँ। एकदम? Yeah, या। ये जो है ये स्मॉल कप है। ये वो लड़कियां या औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं जो जिनको पीरियड्स आए ही हो, मतलब 15 साल 14 साल की हो से लेकर 24 साल तक की, अगर शादी नहीं हुई है और बच्चा नहीं है। ठीक है, ये मीडियम कप है जो मेरे हाथ में है पिंक कलर का। ये वो कप है जो जो 24 ईयर्स एंड अबव या फिर शादी हो गई है और बच्चा है। ये लार्ज कप है, ये उन लोगों के लिए जो या तो कप बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम कप को ज्यादा टाइम तक यूज करें, वो यूज करती हैं। या फिर बिल्कुल 40 साल से ऊपर की औरतें यूज करती हैं। ठीक है, कब कप यूज करना शुरू कर सकते हैं? अगर एक लड़की को कन्वीनियंट लगता है, कंफर्टेबल है, तो वो अपने टीनेज में ही कप यूज करना शुरू कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी बस एक यही एडवाइस है कि जो लड़की है उसकी मदर बहुत श्योर होनी चाहिए कि वो कप को हैंडल खुद भी कर सकती है और उनको सिखा भी सकती है। ठीक है, अगर मदर कॉन्फिडेंट है, कप यूजर है, उनको यूज करना आता है, अच्छे से इस्तेमाल करती है, तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची भी यूज कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने में। बल्कि बहुत सारी अब आजकल लड़कियां जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स में है या स्विमिंग करती हैं या हाइक करती हैं, ट्रैक करती हैं, वो लड़कियां ये इसे इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। right. Please आप कंटिन्यू कीजिए, आप और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. हाँ। तो बस मैं तो बस यही बता रही थी कि आराम से ऐसे यूज कर सकते हैं, इससे कोई आराम से यूज प्रॉब्लम कर नहीं है। सकते हैं. ठीक है, तो एज का कोई इशू नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा जो मिथ है इसके यूजेज को लेकर उसके बारे में हम थोड़ा अगर बात करें, तो मैं ये क्वेश्चन इला से पूछना चाहूंगी कि इला, यू हैव अ grown up daughter, and it's a product which is in product which is inserted in the body, या। and mostly that we hear from a lot of people is that girls who are not married yet should not even go for an internal checkup, forget about यस। using a product month on month. या। So, as a mother, you think that these concerns are there, one, and are they valid concerns from your perspective? And then I'm going to put this to Dr. Arushi also to break that
myth around it, if at all there is a myth. So let's hear it from a mother's point of view. Surprisingly, like when I started chumming, my mother taught me how to use a sanitary napkin. Okay. But at the very same time, she took me to a gynecologist in those times. You know, now I'm 56. I'm over with my menstrual cycle. But she took me to a gynecologist and she asked, can I give tampons to my daughter? बिकॉज टैम्पॉन्स यूज करना भी बहुत बड़ा टैबू होता था अनमैरिड गर्ल्स के लिए. डॉक्टर ने बोला कि अगर ये खेल खेल में टैम्पॉन को निकालना भूल गए तो इसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि बच्चा है, इसलिए मैं इसको डिस्करेज करूंगी, इसको पैड्स पे डालिए अभी. और हाँ, अगर ये कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रही है, खेलने कूदने जा रही है जहां पर ये नहीं चेंज कर पाएगी पैड, तो उस एक आध दिन के लिए आप इसको दीजिए. सो आई न्यू व्हाट टैम्पून्स वर एट द एज ऑफ 15. Okay, practically 4 decades back or more. Yeah. When my daughter started chumming, I gave her the option of the pad and the tampon. मेरे को बहुत मदर्स ने बोला कि नहीं ये ठीक नहीं होता है, how can you give a tampon to your daughter? I said no, it makes her life very easy because there is least fear of being a spillage. क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, कोएड स्कूल में पढ़ता है और वो पूरे टाइम अपना स्कर्ट पीछे से आप चेक करते रहते हो या बार बार आप वॉशरूम जाते हो और आप कितने भी मॉडर्न फैमिली के बच्चे हो, लेकिन ये बच्चे को एक डर हमेशा रहता है, कपड़े गंदे हुए तो क्या, पीपल विल लाफ, आवर क्लासमेट्स विल लाफ एट अस. एंड स्कूल ट्रिप्स पे नहीं जाना क्योंकि उन टाइम पे मेरे पीरियड्स आएंगे कि कहीं कुछ हो गया तो वो चीज़ मैंने उसको ऑप्शन दिए और मैंने उसको बोला कि वेन एवर यू हैव एन एक्टिविटी टू परफॉर्म, यूज द टेम्पोन. Had menstrual cups arrived by then on Indian horizons, I would have happily given her a menstrual cup and I also would have used it for myself. Since my time has gone by, I am trying to convince my daughter to use a menstrual cup. Many of her friends have been using menstrual cups for the last 10 years, 12 years, 15 years. But few of my daughter's friends have had some really bad experiences where the cup got stuck inside and she had to be rushed to the ER and she had to be helped by a medical team. That thing freaked my daughter out. Okay, so this is my personal experience, and I was discussing this with my daughter. And she said, Mama, I was very keen to try it when this happened with certain friend of mine. And मेरे मन में एक डर बैठ गया है. So how would you address that fear, Dr. Arushi? Okay. So first of all, coming to the myth around virginity and hymen, around asking girls to not use an inserting product. So from a medical perspective, hymen is very different from virginity. Anyone who has never had intercourse is a virgin. And hymen is so thin that it is as thin as the skin on my finger. हम सबने कभी बचपन में फिंगर की स्किन में सेफ्टी पिन डाला होगा, है ना? तो ऊपर की जो स्किन होती है ना, उसमें पेन होता है ना खून आता है, राइट? Same is with the skin which is here on the vaginal opening. It is so thin, it has no blood vessels, it has no nerve endings, it has no nerve supply. तो ना उसमें दर्द होता है ना खून आता है. तो हाइमन के ब्रेक होने के लिए किसी लड़की को भागने, दौड़ने, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग ये करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई लड़की चल रही होगी और हाइमन ब्रेक हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा. हाइमन एनीवे परफोरेटेड ही होता है. Yes. Why? Because otherwise the menstrual fluid will not come out. और जिस लड़की का हाइमन परफोरेटेड नहीं है उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है, राइट? So hymen is very very different from virginity. Using a cup will not affect virginity in any way. So that is why कप को एक वो लड़की भी यूज कर सकती है जो 15 साल की है और वो औरत भी यूज कर सकती है जो 40 साल की है, ठीक है? Correct. बिकॉज वर्जिनिटी और हाइमन का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है. बट of course, हमारे societal norms, and then there's so much taboo and so much hush hush about the whole topic that many
women and girls fear of using an inserting product, right? Talking about the menstrual cup getting stuck. So, first and foremost, menstrual cup ऐसे stuck नहीं हो सकता है. There's a feeling which we get when when we get very fearful and जब हम बहुत घबरा जाते हैं. Um, First and foremost, the menstrual cup goes inside the vaginal canal, right? Vaginal canal is so flexible and it is so powerful that it can crush this cup inside, right? The cup stays in its place due to vacuum, okay? And we need to break that vacuum to remove the cup. How we break that vacuum? For example, if I have inserted the cup in the vaginal canal like this, okay, and it has opened in the vaginal canal at the mouth of the cervix. To remove it, I need to take one finger, breathe a little, and apply a little pressure for the cup to come down a little. Okay. I'll take one finger, locate the stem, and pinch at the base. Why? Because I want air from these air holes to come out. ये जो holes हैं ना इसके ऊपर चार, वो holes का purpose ही यही है that because it has created vacuum at the mouth of the cervix, we break the vacuum by pinching at the base with one finger and then remove the cup. Okay. If we will try to pull the cup, we will feel resistance. We will feel it has got stuck. We will feel that कुछ गलत हो गया है. ठीक है. जब हमें डर लगता है ना, सबसे पहले पेल्विक मसल्स को टाइट कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. दूसरी बात, जो कप है वो यहाँ से ऊपर कहीं नहीं जा सकता. ओके. अगर इफ यू इंसर्टेड द कप इन द वजाइनल कैनाल तो वो वहीं से ही निकलेगा. Okay, why? Because there's no place for it to ride up anywhere. No organ in the whole reproductive system is as flexible as the vaginal canal. The mouth of the cervix is too small for the cup to ride up. जगह ही नहीं है उसके ऊपर जाने की. ठीक है. So if the cup has been inserted in the vaginal canal, it will come out from there only. It's just that we need to get used to the whole process, right? That is why it is important to be trained. अगर हम वीडियोस भी देखते हैं ना of how to use the cup, it is important to watch extensive videos, not just how to remove, how to use, how to do this, how to do that, but videos which actually answer all these questions and these fears, right? Right. So, a dumb question, and I'm sure must be crossing on many people's mind also, that once you have the menstrual cup, how does it hinder in terms of your, going to the washroom to pee and things like that? Um, okay. There's some question which I can't Yeah. understand. Maybe we'll get back to that. Yeah, I'm also Um, trying to. She's saying that yeah, it is like the stuck system or by creating vacuum on window screen sheets of a of a car. car. तो बेसिकली वही जो आप वैक्यूम का बता रहे हैं कि वो सक्शन हो हाँ. जाता है एंड करेक्ट उसको अगर करेक्ट कोई वैसा भी ही हो चीज जाता है कि हमें उस सक्शन को ब्रेक करना है. उस सक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें इसे पिंच करना है सो दैट एयर कम्स आउट ऑफ दीज होल्स. सो Okay, so you said, can we use the toilet? या So basically, women have three holes down there. The first hole is the urinary bladder, the urinary opening. The second hole is the vaginal canal, जहाँ से the vaginal fluid and birth canal जिसको हम बोलते हैं. And the third is the anal opening from where we pass stools. So when you go to pass urine, you can have the cup inside, there's no problem. Why? Because these are different openings, right? But when you go to pass stools, you have to remove the cup. Why? Because ऐसा ना हो आप इतना pressure लगा दो कभी कभी कि वो cup गिर जाए नीचे and it falls in the pot. If it falls in the pot, then you can't reuse it. राइट ऑब्वियसली No matter how much sterilization you do, you can't reuse the cup. ठीक है? So when you go to pass stools, you need to remove. When you are peeing, you don't need to remove. ओके So, Dr. Arushi, we spoke about the myth, we spoke about the mindset that is there about young unmarried girls not using this product.
Now, if you look at a sanitary napkin, it's plain and simple. Fix it on the inner wear, and you're good to go. Now, when somebody looks at this product, the make and feel of the product, as you were also showing how it needs to. So, what the opening side is, which is actually going inside. The brain will say, "Oh my God, something like this big is going inside your body." So, how does that fear कि ये इतनी बड़ी सी चीज है जो आपकी बॉडी में जा रही है, डू यू ट्विस्ट एंड twirl it to push it inside, or how does that work? वो आई एम श्योर वो एक फोबिया भी होगा. एंड देन ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने बोला, in order to take it out, you pinch it a little bit so that the vacuum gets released, and then when you're getting it out, the spillage, the soiling of your hands, and people are, that whole myth that this is dirty, all those aspects are still prevalent, and the fact that many households don't even talk about this. Yeah. We are not preparing our girls that, okay, you are reaching that age and it could be a matter of time, considering with all the adulteration that goes around, and the onset of puberty is at a much earlier age than what it used to be. So how does one deal with all of this, and what's the way out? So basically, when you insert the cup, you need to fold it. Okay. And to fold the cup, you need to hold the cup in one hand and punch it down. Okay. Of course, there are many other folds that you can do. There's a 7 fold, C fold, like ample number of folds if you go out and search the internet. I find the punch down fold the easiest because then it comes into an angle at which it has to be inserted, because vagina is not a straight up canal, it is towards your back. So if you try to insert the cup straight up, you will feel resistance of the vagina, wall. But if you push it towards your back, you will be able to insert it very smoothly, right? So that is why this fold. If you fold it in this way, see how small the opening becomes, right? See how small the rim becomes. So then it becomes easier to insert, right? uh, the myth around spillage and how dirty it is and how not nice, how toxic and everything this is. So, just to give you a perspective, this is the uterus, right, of the reproductive system. This is a model of the female anatomical reproductive system, and this is the uterus. So, periods में क्या होता है? Uterus अपने अंदर एक lining बनाता है, जो वो 28 डेज तक बनाता है, और अगले महीने के फर्स्ट दिन को वो लाइनिंग बाहर निकाल देता है अगर इसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं है, राइट? तो ये वो वाली लाइनिंग है, या ये वो फ्लूइड है जहाँ पर अगर एक प्रेगनेंसी होती तो a fetus would have been born and nurtured in this lining. तो अगर वो नहीं हुआ और वो लाइनिंग गिर गई तो तो वो गंदी कैसे हो सकती है, राइट? तो वो डर्टी कैसे हो सकती है? तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जब तक अंदर है तब तक उससे ज़्यादा साफ, उससे ज़्यादा स्टरलाइज कोई भी फ्लूइड हमारी बॉडी में नहीं है. कोविड थूक से फैल रहा है ना, राइट? सो इससे ज़्यादा साफ और इससे ज़्यादा स्टरलाइज कोई भी फ्लूइड हमारी पूरी बॉडी में नहीं है. Okay, so this is not dirty, this is not toxic, there's nothing toxic about it. हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़, औरतों को कुछ भी हो रहा होता है, हम लोग खुद ही एज विमेन हम क्या करने लगते हैं, हम उसको मेंस्ट्रुएशन से अटैच कर देते हैं कि मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, शायद मेरे को पीरियड्स ठीक से नहीं हुए, या मेरी सफाई नहीं हुई है, या मेरी बॉडी से गंदगी नहीं निकली है. तो इस वाले फ्लूइड में ना कुछ भी गंदा नहीं है, और ये आपके नॉर्मल खून से बहुत अलग है. ये खून नहीं है, पहली बात. तो आपकी ये जो वेन्स में खून दौड़ता है और ये वाला जो खून गिरता है, ये एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है? तो ये कहना कि अच्छा मुझे तो पिंपल्स आ रहे हैं, गॉड सफाई नहीं हुई है, या अच्छा मेरे बाल गिर रहे हैं तो इस बार मेरे को पीरियड्स नहीं आए, हम हर चीज पीरियड्स से लिंक कर देते हैं कि पीरियड्स में ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो पहली बात हमें ये करना बंद करना पड़ेगा, और इस फ्लूइड के बारे में कुछ भी गंदा, गलत, टॉक्सिक, खराब नहीं है. ये हमें खुद को भी समझाना पड़ेगा, और अगर हम एज औरतें खुद को नहीं समझा रहे हैं ये, और खुद को ही डिमीन करके
हम खुद के नॉर्मल प्रोसेस को लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं, तो लोग तो करेंगे ही। वो तो फ्रॉम करेक्ट। टाइम विदाउट बिगनिंग कर ही रहे हैं हमारे को, राइट? सो आई थिंक हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इंस्टिल करें सेंस ऑफ पीरियड प्राइड, कि हमारी बॉडी से कुछ भी गंदा, गलत, टॉक्सिक नहीं निकलता है। तो एक बार अगर हम वो कर लेंगे तो आई थिंक और बाकी चीज़ें बहुत ही रेगुलेट हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आई एम श्योर बहुत बहुत इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम सबको आज मिली है यहाँ पे। और आई एम श्योर आपके अगर कोई और सवाल होंगे, आप बाद में भी अगर यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, तो वी विल make those questions reach to Dr. Arushi, and I'm sure she'll be happy to answer those questions. But as we announced our collaboration in the beginning of this session, 28th May is Menstrual Hygiene Day, and keeping that in mind, for the month of May, Motherhood Club and Sirona Hygiene Foundation are going to conduct 3 drives of menstrual cup, by making the women, the girls, know about it, have a detailed training, have an open conversation about the menstrual cup. They will also be given menstrual cup, of course, as per once they are giving their consent that yes, they would like to use it, and with a regular follow up with them, that how comfortable they have been, how their journey of usage has been. That will also be tracked on a regular basis, so that it is not just about giving a product, because that is the easiest thing to do. We are also certain that whenever we give sanitary napkins to some people, many a time they might just actually go and sell that also, for obvious Yes. reason that they may need money for other things and they may not give importance. But here it is not just about giving the product, but also making them aware, and convincing them to use it. And only once they are completely convinced will the product be handed over to them with a regular follow up. So there are 3 setups that we have identified in Delhi NCR as a first to kickstart this project in the month of May, which is the month for menstrual hygiene also. So we will keep you all posted as to how the response has been by the women, by the young girls who we meet there. And we are hopeful that we are able to offer this to many people, and they will be convinced and they will go beyond the myth, beyond the taboos of periods, and लोग बोलने में भी कतराते हैं, and that hush hush. So we've been trying that whenever we go meet someone, we tell them that you need to kind of, with swag, show the sanitary napkin packet in your hand. And I'm sure we will do that with the menstrual cup also. So anything else that you would like to ask, Ila, before we say thank you completely to Dr. Arushi? There's like nothing more at the moment. एंड एज यू राइटली सेड कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज अभी तो हम भी इस डोमेन में नए नए उतरे, तो हमारे अंदर नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आज हमने पूछे, और हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे डॉक्टर आरुषि. लाइक वेन एवर वी हैव अ क्वेरी, we'll put it across from our audiences or from whatever creeps in our minds also. And I want to tell everyone दैट मेंस्ट्रुएशन में सच में कोई गंदगी नहीं होती है. लोग अचार नहीं छूते, अचार नहीं डालते. मैंने जान जान करके सिर्फ पीरियड्स के दिनों में ही अचार डाला और रोज अचार निकाल निकाल के खाया. Same मेरा here. कभी भी कोई अचार खराब नहीं हुआ. चाहे मैं बनाती हूँ तब भी खराब नहीं होता है, और अगर मैं उसको छू लेती हूँ तब भी खराब नहीं होता है. तो ये बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. नथिंग डूइंग, नथिंग इज डर्टी. हमारे शरीर से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं है. और जैसा डॉक्टर आरुषि ने बोला कि सबसे ज़्यादा पवित्र हमारा जो यूट्रस के अंदर का जो ब्लड है वो ही सबसे प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर रीवैलिडेटिंग माय ओन कॉन्सेप्ट्स, या जिसे कहना चाहिए कि जो मेरी आज तक की जो सोच थी उसको आपने रीवैलिडेट किया है. एंड आई वुड रियली लाइक, क्योंकि अभी आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है, कि हम कभी नेक्स्ट जब मिलें, सो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम women what they feel about this. So let's hope that we are able to convert many and many women towards a dignified period life. That's all. Thank you. Absolutely. And it's a right of every woman to have a healthy, clean, and a happy period. So let's all aim towards it. Do talk to people who you know about the menstrual cup.
talk to your young girls, break those myths for your own self and for the others. And I'm sure we will keep knocking on and on to talk about this on a regular basis. And like Ila said, we will also share the inputs that we receive from all those people who we will be meeting. So we are hoping for a large number to talk to share the insights. So let's hope for the best. So thank you so much, Dr. Arushi, for being here for this amazing collaboration. And we are very excited and we are looking forward for a very first drive very soon. And till then, let's all be happy and let's also read up more about it, Ila, for you and me, so that we are Yes, also prepared to yes. assist and support So Dr. let's gear Arushi up. during our drive. Let's start gearing up for our drive, first ever Absolutely, drive. Yes. absolutely. Thank you So so much. thank you Thank you so so much, Dr. much. Arushi. Thanks. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. All right. Bye. So I think before we go, there's this one comment that has come by Tapasya. Because of menstruation, we give birth to a new life from a form. Hence, it's the most sacred life process, is what I believe. And this was told by my mom to me. You're absolutely right, Tapasya. And that is exactly what Dr. Arushi also explained, that, it is the most pure. And since that lining is in the uterus, which is protected, how can it be impure? It is just because that fertilization didn't happen, and hence there is a fluid which is flowing out of your body. There was another thing that had come, that it looks very uncomfortable, the menstrual cup जब आप उसको display कर रहे थे. I think it was a parallel comment to what I asked you. So I'm sure that since the material is soft, and it is, taking, I think, the shape of the structure inside, it will be Yes. comfortable. So that is not and you can lead a normal day-to-day activity life, and I'm very happy to hear that I can use it for my swimming also. So I Yes, will yes. definitely I don't want to miss my I'm swimming a because part of of this. a few groups on FB where menstrual cup has been quite often it is being discussed, and I'm so happy to know that women have given this to their daughters ever since they started chumming. More and more women are giving this to their daughters, and they've started using it for themselves also. So all in all, I am very sure that we are in the right direction. Wonderful. So finally, bye bye Yes. everyone. Thank you, take care, and see you soon everyone. Thank you, Dr. Thank Arushi, you. from Bye the entire bye. Thanks. team of Thank you. Motherhood Club. Bye. Thank you.